Hello friends, last lecture we have seen adjoint method to find the inverse of square matrix MCA हमने रूल देखा था और उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था. स्टूडेंट्स, minor cofactor and adjoint, these three requirements are essential. उसके बाद ये जब आप ढूंढ लेते हो, पहले माइनर निकलेगा तो कोफैक्टर निकलेगा तो एडजॉइंट निकलेगा और फाइनली एडजॉइंट निकलने पे आपको उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ए इनवर्स का ये फॉर्मूला यूज करके ए इनवर्स का मैट्रिक्स ढूंढ लेना है. ये हमने पूरा प्रोसीजर देखा स्टूडेंट्स. इन टुडेज सेशन आल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. This particular matrix is given और स्टूडेंट ये मैट्रिक्स मैंने एग्जांपल के तौर पे आगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए सॉल्व किया था इनवर्स. तो स्टूडेंट्स इसलिए मैं ये वापस ले रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इनवर्स का जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट आई एम गोइंग टू गेट सेम दो द मेथड डिफर्स. वो अर्लियर हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन में मेथड में रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किया. In both that methods we were getting same A inverse matrix, and in this method in adjoint method also we are going to get the same A inverse. So student, let us have practice. एक प्रकार से हमको वो वेरीफाई, मैंने उस समय बोला था कि later when we come on this adjoint method, at that time this same problem I am going to take as an example. So let me consider this particular matrix solution. Let हम ले लेते हैं इसको A matrix. Let A matrix is this is given 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0. So this is my matrix. Now first of all I have to find out determinant A, so that A inverse exist होता है कि नहीं ये हमें पता चल जाना है. So let me expand this determinant. Okay, so this is 25, this is 40, this is going to be -15 into -2 plus 30. They are going to cancel. Answer is 25, which is not equal to 0. What does it mean? Determinant A is not equal to 0. Therefore, what we can say? Matrix A is non-singular. Non-singular. Students, इससे क्या पता चलता है? Hence, matrix A is invertible. Is invertible. Now, determinant value ऐसे भी हमको काम में आने वाला है, as you know, in the adjoint procedure, adjoint method के लिए जो inverse हम निकालने वाले हैं उसके लिए हमको ये determinant value 25 काम में आने वाला है. So fine. Now MCA के रूल के तरफ हम आगे बढ़ते हैं. पहला हम माइनर निकालेंगे. तो फर्स्ट आप हेडिंग दे दीजिए minors. So let me find out
first minor of all these elements. 9 elements total मैट्रिक्स के लिए है, तो उसके हिसाब से 9 माइनर्स आई एम गोइंग टू ऑप्ट। नाउ फर्स्ट माइनर के लिए हमारा नोटेशन है m, फर्स्ट एलिमेंट m11। तो भाई आपको देखना है कि ये फर्स्ट एलिमेंट m11, ये पोजीशन वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, उसको आप कंसिडर करो, उसके रो और उसके कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, you are going to get a matrix determinant 0 minus 5 5 0, and if you solve this you are going to get a minor of that particular position m11, that is a 0 minus 5 into 5, and this is minus 25, this is 25. This is what we are going to get. Now m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट का माइनर ढूंढ रहे हैं, तो वो फर्स्ट रो में है, वो फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो, सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या डिटर्मिनेंट बचता है ऑर्डर 2 का, -3 -5 and 2 0 2 0, this is we are getting. Now this is 0 minus 10, which is 10. Okay, next minor m13, that is first row or third column, इसका हम माइनर निकाल रहे हैं, so that is going to be -3 0 and 2 5. So the minor m13 will be -15 minus 0, that is -15. Now next minor m21, that is second row first column. This is our element for which we are going to find minor. तो वो फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है, तो वो एलिमिनेट करो, कौन से एलिमेंट बचते हैं बाकी के, 3 - 2 5 0, 3 - 2 5 0, this will be 0 minus 10, that is 10. next m22 का हिसाब क्या आ जाएगा, for this element we are finding the minor, so this is in the second row and second column, so the elements for the determinant of minor will be 1 2 1 minus 2 2 0, 1 minus 2 2 0, that comes to 0 minus -4, that is +4. The next one will be the m23, second row third column, this will be your element for minor. So this particular minor can be obtained with the help of determinant 1 3 2 5, 1 3 2 5, which will be 5 minus 6, which is going to be -1. Next m31, third row first column, so the minor will be 3 minus 2 0 minus 5, 3 minus 2 and 0 minus 5, which will be -15 minus 0, which is -15. Then m32, for this element we are going to find a minor, that is it is in the third row and the second column, so determinant will be
1 minus 2 minus 3 minus 5. 1 minus 2 and minus 3 minus 5. Minus 3 minus 5, which will be minus 5 minus plus 6, that is minus 11. Okay, and last one M33, उसका जो माइनर निकलने का है, that will be for this element we are talking about, and this is in the third row and third column, so the determinant will be 1 3 minus 3 0, 1 3 minus 3 0, which is going to be 0 minus minus 9, that is plus 9. So student, ये 9 elements हमें माइनर के मिल चुके हैं. After getting these minors, what is the second step we are going to follow? MCA, minor के बाद cofactors. So now it is turn to find out the cofactors. So second heading दीजिए आपका, आपको जो ढूंढना है cofactors ढूंढने हैं. What you will find? Cofactors. Now to get the cofactors, what is the procedure for getting cofactors? And for cofactors I am going to use letter C. So as we know, for getting cofactors I am going to apply particularly माइनर्स, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर्स का उपयोग करना पड़ता है. सो व्हाट इज द फिक्स थिंग वी हैव टू राइट every time? -1 you have to write every time, but the power should be here 1 plus 1, because the element of cofactor we are finding at the position 1 1. so power में 1 1 दोनों रो का और कॉलम का पोजीशन का एडिशन होगा, and multiplying with the minor of that particular position. So minus 1 raised to 2 into M11. Look at minus M11 वाला कौन सा एलिमेंट है? आंसर क्या है M11 का? 25. So 25 will be in the multiplication, and finally minus 1 का square 1 into 25, 25 itself. Next C12, next cofactor, minus 1 raised to 1 plus 2 into M12. So this is minus 1 raised to 3. What is the minor M12? That is 10. So that 10 you have to do multiply, and that becomes minus 1 raised to 3 minus 3 into 10 minus 10. C13 minus 1 raised to 1 plus 3 into M13. What is minus 1 raised to 4, and what is M13? M13, it was minus 15. Minus 15 into minus 15, which will be minus 1 raised to 4, that is plus 1 into minus 15, that is minus 15 itself. Then C21, which will be minus 1 raised to 2 plus 1 into M21. So first you find this minus 1 raised to, it becomes 3, and what is M21? M21 is 10, that is 10, which is going to be minus 1 raised to 3 minus 1 into 10 minus 10. Next one, C22, that is minus 1 raised to 2 plus 2 into M22, that is minus 1 raised to 4
into m22. What is m22? That is 4 plus 4. So minus 1 raised to 4 is plus 1 into 4, 4. Next is C23 is minus 1 raised to 2 plus 3 into M23, which will be minus 1 raised to 5, and M23 it is minus 1, so into minus 1. First of all, minus 1 raised to 5, that is minus 1 into minus 1 plus 1. Next is C31 is minus 1 raised to 3 plus 1 into M31, that is minus 1 raised to 4 into M31. देख लो क्या है, M31 is minus 15, so into minus 15, which will be minus 1 raised to 4 is 1 into minus 15 minus 15. Next, C32, this will be minus 1 raised to 3 plus 2 into M32. First you get the value of minus 1 raised to 5 और उसको मल्टीप्लाई करना है M32 के हिसाब से. M32 क्या है, minus 11 into minus 11. So minus 1 into minus 11 plus 11. And next is C33, that is minus 1 raised to 3 plus 3 into M33, that is minus 1 raised to 6 into, what is M33? M33 was 9, multiply by 9. So students, minus 1 raised to 6, which is going to be plus 1 into 9 itself. तो ये स्टूडेंट हमको कोफैक्टर्स मिल चुके हैं. नो एलिमेंट, नो माइनर्स और नो कोफैक्टर्स. 9 कोफैक्टर्स as there was 9 माइनर्स. स्टूडेंट्स, कोफैक्टर का हमने मैट्रिक्स भी बनाया हुआ है. देखो यही 9 एलिमेंट को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अप्लाई करके उसका प्रेजेंटेशन दे दो तो वो क्या बन जाएगा, उसका मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना. इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है. कोफैक्टर के एलिमेंट है, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा. दैट विल बी 25 minus 10 minus 15 minus 10 minus 15 minus 10 4 1 minus 10 4 1 and minus 15 11 9. Okay, this is our cofactor matrix. So cofactor वाला step हो गया students. Second step is done. Now the third step and the final, that is MCA का जो final है A, adjoint. We are going to find third part, adjoint. Adjoint A, that can be written as ADJA. Okay, short में ADJA. That is जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला है उसका ट्रांसपोज. That is transpose of cofactor मैट्रिक्स. दैट मीन्स, अच्छा अपन ने अभी ऊपर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला है उसका ट्रांसपोज निकलेगा 25 minus 10 minus 50 minus 10 4 1 minus 15 11 9. इसका ट्रांसपोज, that will be
first row will become first column 25 minus 10. Second row will become second column minus 10, 4, 11, and third row will become third column. This is minus 10, 4, and 1. And third row will become third column minus 15, 11, and 9. So this is our adjoint A. Adjoint A. Now, what is the final part we are going to execute? Number 4. एम सी ए में तो खाली ए में खत्म हो जाता है ना एडजॉइंट के साथ, लेकिन फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप वी हैव टू कंसीडर फॉर फाइंडिंग द इनवर्स. लास्ट है ना, लास्ट स्टेप तो करना जरूरी है ना, इनवर्स तो तभी मिलेगा. दैट इज इनवर्स. सो ए इनवर्स क्या है फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए. जो एडजॉइंट ए आपने ऊपर ढूंढा मैट्रिक्स, उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए. डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए. सो व्हाट वाज द डिटर्मिनेंट वैल्यू? देखो अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? 25. उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 25 into the matrix adjoint A. 25 minus 10 minus 15 minus 10, 4, 11, and minus 15, 1, 9. So this is our answer, A inverse. Students, मुझे एक और आपको इसमें शॉर्टकट मेथड बताना है, और जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे डायरेक्ट स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आप डायरेक्टली जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स फिर एडजॉइंट उस पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं. लेट मी show this shortcut method in this example only, so that you can easily understand by comparing it, and you can estimate that how much minimum time we are consuming for this direct method. Okay, fine students, same problem I'm taking, and now I am going for shortcut method that we are going to call it as jumbo matrix method. Let me show you how we are going to proceed this particular method as far as this shortcut procedure is concerned. Students, हम क्या करते हैं normally? माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, और फिर एडजॉइंट पे जाते हैं. So now I would like to show how we are going to find cofactor matrix directly. So first we are going to find cofactor matrix direct. Means माइनर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बाद कोफैक्टर को भी आप अलग से निकालते हैं, उसका भी पूरा वो प्रोसेस नहीं करना है. सीधा कोफैक्टर मैट्रिक्स डायरेक्टली किस तरह से मिलना है, लेट मी शो यू विद दिस जंबो मैट्रिक्स मेथड. सो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर हियर, कोफैक्टर मैट्रिक्स in front of you in terms of jumbo matrix. This is what the presentation is going to be for the jumbo matrix. स्टूडेंट ध्यान रखिए, सिंपल मेथड है, सिंपल टेक्निक है. जस्ट मैंने
टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी. So here I am making a matrix which is called a jumbo matrix. In that 9 elements I have to find out in terms of minors, and that minors I am going to show you with the help of this minor matrix, minor elements in terms of determinants. Don't have any confusion, it is very systematic and step by step. ये मैंने 9 एलिमेंट के 9 डिटर्मिनेंट्स जो माइनर के तौर पे बन रहे हैं हमारे, वो हम अलग से नहीं बनाते हुए इसी के अंदर बना रहे हैं. मतलब वी आर कवरिंग दिस माइनर्स इनटू दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स इटसेल्फ. अब आप जरा शांति से समझिए. फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसका पोजीशन है 1 1, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और उसको पावर में हम लिखते हैं. तो ऑर्डर जो भी है उस पोजीशन का, उसको हम पावर में ऐड करते हैं, तो 1 + 1 वो पावर बनता है 2. 2 इज इवन, और -1 का इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव 1 देता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, हियर यू आर गोइंग टू हैव प्लस साइन. Next element, if I talk about the second element, that is first row and second column, 1 and 2. 1 + 2 पावर में आता है 3 होता है. -1 के पावर में 3 ऑड आया, तो ऑड आएगा. -1 के पावर में कोई भी ऑड नंबर होगा तो आंसर फाइनली माइनस में आने वाला है. सो दिस इज माइनस. दिस एलिमेंट 1 3, 1 + 3 4, इवन आया, अगेन द साइन विल बी प्लस, and so on. This is minus. अब चेक कर लो. नेक्स्ट दिस पोजीशन इज नोन एज सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. तो 2 + 1, दिस विल बी 3 टोटल. -1 के पावर में 3 जाएगा, -1 ही रहेगा क्योंकि ऑड है, माइनस आएगा, माइनस, देन दिस इज प्लस. अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट हियर विद द प्लस, देन अल्टरनेटिवली आप प्लस माइनस चलते जाइए. प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस. ऑटोमेटिकली ये सेट होना है, and you can verify it. And after having verification, you should not bother about any kind of confirmation. Just go on, just take down this particular pattern. Now about minor I am talking. So this determinant will carry 4 elements or minors, and that you have to see to this matrix कि जिसका आपको adjoint मेथड से इनवर्स फाइंड करना है. उसके हिसाब से माइनर का मैट्रिक्स बनाते जाओ. आप जज करके प्रॉपरली क्या माइनर बनता है वो आप वहां लिखते जाइए. पहले एलिमेंट के लिए बनेगा 0 -5 5 0. नेक्स्ट का माइनर बनना है, दैट इज -3 -5 2 0. देन दिस नेक्स्ट एलिमेंट -2 का माइनर बनेगा, दैट इज -3 0 2 5. नेक्स्ट अपना एलिमेंट जो है उसका माइनर जो है दैट विल बिकम -3 का माइनर जो बनेगा 3 -2 5 0, 3 -2 5 0. देन द नेक्स्ट 0 का माइनर बनेगा 1 -2 2 0, 1 -2 2 0. Then the next element will have -5 का माइनर बनेगा 1 3 2 5, 1 3 2 5. Then this one 2 का माइनर बनेगा 2 का माइनर बनेगा 3 -2 0 -5, 3 -2 0 -5. नेक्स्ट 5 का माइनर बनेगा
1 minus 2 minus 3 minus 5, 1 minus 2 then minus 3 minus 5 एंड लास्ट एलिमेंट जो है उसका माइनस 0 का बनना है 1 3 minus 3 0, 1 3 minus 3 0. स्टूडेंट्स ये एक आपको सेटअप बना लेना पड़ता है एंड देन यू विल फाइंड डायरेक्ट दिस पर्टिकुलर कोफैक्टर matrix. So student, now I am going to simplify the element the determinants and so as we can get the cofactor matrix directly. हाँ, अब ये थोड़ा आपका काम डायरेक्ट होना है बट प्लीज ये मैं मेथड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कंज्यूम दिस मच टाइम. बट इफ यू हैव प्रॉपरली मैनेजिंग, अब आपने समझो प्रैक्टिस करके उसको प्रॉपर फ्लुएंट बना लिया है तो यू कैन हैव एट अ स्ट्रेच जिसको हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए कर सकते हैं. आई एम सेइंग दैट वे. Why I am taking even I am saying this is a shortcut method, फास्ट होने वाली है, वो कभी हो जाना है तुम्हारे से तो तुम जितना प्रैक्टिस लेके उसको फ्लुएंट बना लो. मतलब आगे पीछे का टाइम पास इसमें क्या हो रहा है, कट हो रहा है, क्योंकि जिसमें हम माइनर अलग ढूंढते हैं, कोफैक्टर अलग ढूंढते हैं, वो सब चीज का काम हमारा खत्म हो गया. डायरेक्टली मैट्रिक्स कोफैक्टर का मिलेगा जिसमें माइनर ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है. देख लो. So this is 0 minus minus 25, that is plus 25. And the next one is minus 3 into 0, 0, 0 minus minus 10, that is plus 10. Next is 3 into minus 3 into 5, minus 15, minus 0, minus 15. Next 0 minus minus 10, plus 10. And 0 minus minus 4, plus 4. 5 minus 6, minus 1. बट वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो भी आंसर आया बार माइनस था तो ये माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 10 के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है. ये बार का साइन उसको अप्लाई करना है. दिस इज ऑर्डर इन प्लस, तो अंदर माइनस आंसर आया तो बार माइनस रहना ही है. एंड नेक्स्ट इन दिस ऑल्सो माइनस बाहर है तो प्लस 10 आंसर था और बार माइनस है, दैट माइनस 10. Then next this will be 5 into 1, 5, 5 minus 6, minus 1, bar minus है already, this becomes plus. Next one, this will be minus 5 into 3, minus 15 into 0, minus 15 minus 0, minus 15. Next one is minus 5 into 1, minus 5 into 1, minus 5, minus 5, minus plus 6, that is minus 6, minus 5, minus 6, minus 11 and bar minus है तो plus 11 हो जाएगा. And lastly 0 minus minus 9, that is plus 9. So see this particular matrix we got as a cofactor matrix. कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल चुका है. एंड नाउ कोफैक्टर के बाद डायरेक्टली मैं एडजॉइंट पे आऊंगा. दैट एडजॉइंट I need to find with the help of transpose of cofactor matrix का transpose करना है. So I will write transpose of which will be 25 minus 10 minus 15 minus 10 4 1
-15, 11, 9, इसका पूरे का ट्रांसपोज, that I am going to have 25 -10 -15 -10 4 1 -15 11 9, and this is what my adjoint method. And now final step, that A inverse, that is 1 upon determinant A into adjoint A. So 1 upon, what was the determinant value was 25. ओके, अच्छा आगे जो मैंने स्टार्टिंग का पार्ट बताया हुआ है कि जिसमें भी जिसका भी हम इनवर्स ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है जिनके लिए भी, उसको पहले तो हमको इन्वर्टिबल है कि नहीं वो चेकिंग करना पड़ता है। वो आप उसके हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट वैसे ही रखना है कि भाई पहले हमें चेक करना पड़ेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन सिंगुलर आना चाहिए, ए इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, देन वी विल बिगिन विद दिस मेथड। ओके, so assuming that you have already done that step of finding determinant value of A, and that is 25, and that we are going to substitute here into adjoint A, that is 25 -10 -15 -10 4 11 -15 1 9. So this is our answer we got in this much of procedure. So in terms of the whole method what I have explained to you, in which I have obtained minor individually, cofactor individually, then cofactor matrix I got, and then after cofactor matrix, then inverse part, this formula part. So little bit we are having shortcut way in which we save our time, our effort, and we come to the same conclusion. See, if we compare our answer 1 upon 25, 25 -10 -15 -10 4 11 -15 1 and 9, the same answer, because मैंने कुछ चीज को ये कंप्रेस कर दी, जो हम लोग एलाबोरेट करके ले रहे थे उसको हमने ये जंबो मैट्रिक्स में डाल दिया, एंड इसको और मैं कट शॉर्ट कर सकता था, जैसे कि मैंने ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया। ओके, व्हाई कांट आई फाइंड डायरेक्ट एडजॉइंट, ठीक है ना? तो मैं कैसे कर सकता था, तो कि कोफैक्टर मैट्रिक्स को जो मैंने बना के लिया हुआ है जंबो में, उसको मेरे को कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, ये एडजॉइंट ए करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है। तो मैं क्या करता था, आप डायरेक्टली जो चाहते हैं कि मैं एडजॉइंट ए मैट्रिक्स फाइंड करूं, तो ये जो जंबो मैट्रिक्स हमने ढूंढा है उसका ट्रांसपोज ले लेने का है, दिस वे। स्टिल यू कैन गेट शॉर्टकट, तो वो मेरा सिस्टम तो वही रहेगा, साइन का प्लस से शुरू करें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एंड ऊपर ट्रांसपोज हुआ, पहले से मैंने खड़ा रखा है, मतलब क्या करने का, जैसे इस मैट्रिक्स को आप फाइंड करोगे, ट्रांसपोज निकाल के लेने का तुरंत, तो एडजॉइंट मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इजी मेथड। और कोई बोलेगा कि सर डायरेक्टली हम ए इनवर्स को ही फाइंड करेंगे क्या, तो क्यों नहीं कर सकते? तो कि यहाँ देखो मैं क्या मॉडिफिकेशन करता हूँ, डायरेक्ट ए इनवर्स ही फाइंड करना है ना, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए लेके ये जो मैट्रिक्स बना है वो पूरा का पूरा एडजॉइंट मैट्रिक्स बना है। सो व्हाट वी कैन राइट, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास एडजॉइंट ए, और ये पूरा एडजॉइंट ए नीचे मैंने जंबो मैट्रिक्स के फॉर्म में बना दिया हुआ है। सो स्टिल आई गॉट दिस शॉर्टकट। दो तीन स्टेप, हार्डली तीन स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। एक तो मुझे वो ए का डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में ढूंढना पड़ेगा,
और उसको मेरे को पहले बताना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं, वो एक मेरा स्टेप बनना है डिटर्मिनेंट ढूंढने का। दूसरा, डायरेक्टली मैं ये ए इनवर्स का हिसाब ये जंबो मैट्रिक्स में डाल दूं, तो जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 2 स्टेप पकड़ के चलो, टोटल 3 या 4 स्टेप में हार्डली you can conclude your A inverse. This is a method came into my mind with this thought process कि जो ये जो प्रोसीजर हम लंबा चौड़ा करा रहे हैं उसको क्यों ना हम शॉर्ट में कर लें, कंप्रेस कर लें, ताकि the same process what we are going to obtain can be concluded easily with this jumbo matrix. Fine, but students एक बात है, they required पूरा का पूरा मेथड, तो we don't want to argue कि ये मेथड का हिसाब हमें करके फास्ट काम करके बता के वो करना है. We are going to go with the genuine method what we have already done, in which अलग से कोफैक्टर होना जरूरी दिखना है और फिर एडजॉइंट का हिसाब दिखा के फिर आप ए इनवर्स का हिसाब दिखाओगे. दिस पर्टिकुलर स्टेप्स कैरीज मार्क्स. ये समझे 4 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं या 5 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो इसके सभी स्टेप्स के कुछ ना कुछ लेवल तक के मार्क्स अलॉट किए रहते हैं. सो व्हाट यू नीड टू हैव दैट ओरिजिनल मेथड जो हमने किया हुआ है उसी तरह से आपको करना है इन द एग्जामिनेशन. दिस इज जस्ट आपको मैंने इसलिए बताया, थोड़ा आपका माइंड भी क्विकली काम करेगा और फास्ट आपको भी एक मेथड जानने मिलती है कि दिस कैन बी ऑल्सो डन with the help of particular technique. Fine. So with this, I am concluding this lecture. This lecture again, I said I have taken that question which I had earlier taken in terms of finding A inverse with the transformation. Then the same question I have taken so that you will have to confirm that the same A inverse we are getting. Second thing, मैंने प्रीवियस लेक्चर भी पूरा एडजॉइंट मेथड के ऊपर लिया हुआ है, इसमें एक एग्जांपल भी अलग से मैंने सॉल्व किया हुआ है. अच्छा, तो यही एग्जांपल लास्ट लेक्चर में ले सकता था, बट मैं सोचा कि मैं नया कोई एग्जांपल ले लूं ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा एग्जांपल्स करने मिले. और मेरे पास जितने भी एग्जांपल, मैंने आपको लास्ट में भी बोला कि जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है उसको आप दूसरे तीसरे मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करिए. जैसे ये एक क्वेश्चन मैंने लिया लास्ट लेक्चर में, उसको मैंने एडजॉइंट से ही किया है, तो वो क्वेश्चन को, वो मैट्रिक्स को आप ए इनवर्स ढूंढने का ट्राई करो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से. और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के टाइम मैंने जो क्वेश्चन लिए थे उस मैट्रिक्स को आप लेके सॉल्व करिए एडजॉइंट मेथड से. सो यू विल गेट मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व. प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा होगा, आंसर आपके सामने रहेगा. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि भाई मेथड में कोई भी कर रहा हूँ आंसर सेम मिलना चाहिए. So with this I'm concluding. Please have proper practice. आप भी properly solve कीजिए खुद और solved example को लेके आप आगे काम कर सकते हैं. Thank you friends.